पंकज, अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। Yeah, I'm right now working in S&P Global. ओके, एंड आपका यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या है एग्जैक्टली? Designation मेरा है lead data analyst French, हम्म। but it is more sort of research analyst profile, I would say. हम्म। Research analyst finance will be like researching about companies and using that data and will be like feeding that data to our tool. हमारा एक जो इंटरनल अभी तो like I just started like एक हफ्ता हुआ है मुझे. So ओके। even I don't know अच्छे से कि what I'll be doing, but it will be a research analyst sort of profile. ओके, तो आप Research रिसर्च analyst. तो आप रिसर्च करोगे मतलब कंपनीज के बारे में, ये कह रहे हैं? Like S&P Global has a lot of tools. हम्म। तो उन टूल्स में वी हैव टू like put information in everything. Like we have to maintain the databases and everything. हम्म। तो हम हेज फंड मैनेजर्स से लेके पोर्टफोलियो हम्म। मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स सबसे लाइक विल गेट इन टच एंड विल ट्राई टू लाइक collate the data and put it up on our tool so which can be later used. So, ओके, तो इसमें फ्रेंच का रोल क्या रहेगा आपका फिर? so I'll be मतलब मैं फ्रेंच मार्केट प्लेस फ्रांस के हेड फंड मतलब जो भी मैनेजर्स हैं सारे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में उन हम्म। सबसे बात करूंगा फ्रांस फ्रेंच उसके लिए फ्रेंच मार्केट प्लेस के ओके, ग्रेट। और आपने लिए. बोला डेटा एनालिस्ट, तो मैं डेटा एनालिस्ट के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। तो आपने डेटा एनालिस्ट का कोई ऐसा कोर्स कर रखा है? हाउ यू गेट इनटू दिस? सो आई हैव डन मतलब मैंने एसक्यूएल सीखा है एंड मैंने पाइथन भी लाइक मैंने खुद से ही मतलब सीखा है मैंने लाइक जो हम्म। ऑनलाइन अवेलेबल टूल्स हैं फ्री. हम्म। लेकिन इस रोल में मेनली फ्रेंच का ही था. ओके। मतलब माय फर्स्ट राउंड वाज फ्रेंच इन फ्रेंच. सेकंड राउंड वाज आल्सो इन लाइक फ्रेंच एंड लाइक बेसिक लेवल पे थोड़ा फाइनेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज दे आर रेडी टू टीच यू हम्म। like whatever things you need to learn. So like हम्म। this was like French was only the gateway to the job हम्म। because अभी मेरा जो last profile था that was also French, but that was a totally different profile. That was uh, catalog associate French in Amazon. हम्म। So there I used to मतलब फॉर एग्जांपल आप फ्रांस में एक वेंडर हो और आपको अपना कैटलॉग आपको अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं अमेजोन फ्रांस की मार्केट प्लेस पे. तो आपके पास सारे टूल्स हैं कि आप खुद कर सकते हो उसे. हम्म। बट इफ आप अगर इशू वगैरह फेस कर रहे हो तो आप हमको रीच आउट कर सकते हो एंड देन हम पूरा आपके प्रोडक्ट सेटअप करेंगे. हम्म। तो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. मतलब हम कम्युनिकेशन ट्रबल शूटिंग टेम्पलेट पॉपुलेशन एंड ऑल दैट हम लाइक अमेजोन में लास्ट जॉब में आई यूज्ड टू डू दैट. एंड नाउ यहाँ पे थोड़ा प्रोफाइल फाइनेंस में लास्ट लास्ट वन वाज मोर लाइक ई कॉमर्स एंड वेंडर सपोर्ट सॉर्ट ऑफ रोल. हम्म। तो इसमें जैसे आपने जो डेटा एनालिस्ट या ये एसक्यूएल, इसका कोई आपने कोर्स किया हुआ है? कैसे सीखा आपने ये? एसक्यूएल मैंने लाइक ऑनलाइन यूट्यूब से आई लर्न हम्म। एंड देन उसके बाद देर इज अ वेरी फेमस साइट कॉल्ड लीड कोड. तो हम्म। काफी ज्यादा कोडिंग कम्युनिटी में लोग यूज करते हैं तो वहां पे आई डिड 50 एसक्यूएल क्वेश्चंस. एक लाइक प्लेलिस्ट था. हम्म। देन आई डिड हैकर रैंक में एक सर्टिफिकेशन होता है लाइक दे विल हम्म। टेक अ टेस्ट एंड इफ यू पास इट देन यू विल गेट अ बेसिक लेवल मीडियम लेवल एडवांस लेवल सर्टिफिकेट. So हम्म। right now I got like a basic level certificate. तो इसमें जिस कंपनी में अभी आपकी जॉब लगी है, तो क्या इसमें आपका डेटा एनालिस्ट आने का या एसक्यूएल आने का भी थोड़ा उसको फायदा मिला है आपको? Like हमेशा मतलब अगर if you know a skill that is not a like a bad thing, हम्म। but I would say नहीं मतलब हम्म। mainly it was due to French. Like because मेरे दोनों राउंड फ्रेंच में हुए थे. हम्म। So because क्या है कि they have their own tools हम्म। ना. अगर लाइक एक बेसिक टेक कंपनी होती मतलब नॉर्मल जो टेक कंपनीज होती हैं एंड दे आर यूजिंग अ लैंग्वेज दैट इज डिफरेंट बट दे हैव देयर ओन टूल्स. तो आपको फाइनेंस का वो मतलब दे वर रेडी टू टीच मी. आई आल्सो मतलब नो अबाउट फाइनेंस. हम्म। मैं बहुत ज्यादा लाइक इंटरेस्टेड हम्म। रहा हूँ फाइनेंस के बारे में तो मैंने हम्म। बहुत लाइक खुद से ही मतलब फॉर इंटरेस्ट आई हैव रेड प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन फाइनेंस हम्म। एंड तो वो था. एंड देन हम्म। फ्रेंच मेनली उनको था कि फ्रेंच अगर आती है
So we can teach you the skills. ओके, तो So आपको मेन आपकी जो जॉब लगी वो फ्रेंच की वजह से लगी, बाकी सारी चीजें तो कंपनी बोल रही है कि हम आपको खुद ही सिखा देंगे। right, पर right, right, फ्रेंच नहीं सिखा सकते इसलिए बोला कि हाँ बाकी सब सिखा देंगे, लेकिन अच्छा है आपके पास फ्रेंच है, कम एंड जॉइन अस, right, राइट? right, 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 ओके। right, right. It was French ओके, only, yeah. जब आप अमेजोन आपने जॉब ज्वाइन किया था, तो अमेजोन में आपकी जो इनिशियल सैलरी पैकेज था एज अ फ्रेशर, वो कितना था? So I got a package of 5.2, हम्म। which was lower in the sense that I was an L2, like हम्म। French, like Amazon में roles ऐसे होते हैं, like L2, L3, L4, L5. हम्म। So at that time, like L2, L3, like the interview process is more or less same only. Maybe one more round, but like it is same only. But at that time, I applied to L3 positions as well, but I got a call for L2. So after that also, if I would have gotten a call for a L3 role, so it would have been nearby 6, एंड जब आप नेक्स्ट कंपनी आपने ज्वाइन की, ये आपकी सेकंड कंपनी जो अभी आपने ज्वाइन की है, right? तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो सैलरी है वो बढ़ा होगा, तो कितने 20% आपको हाइक मिला है, 30% हाइक मिल गया होगा? Like yeah, if I like yes, like fixed terms, I got like 33% hike, right? 33% हाइक, ग्रेट, इनिशियली है Yeah, ना? तो आपको yes. ओवरऑल अभी कितना समय हो गया जॉब करते हुए? 4 years. I just like 4 साल हो four गए, फोर point. ईयर्स Yeah, like 4 years, few हम्म। months, three, हम्म। 2, 3 months, right? ठीक है। जैसे आपने डेटा एनालिस्ट किया हुआ है, एसक्यूएल भी आपको आता है, तो मैं इसी पे आता हूँ। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ एडिशनल कोर्स करना चाहते हैं आज के टाइम में, कुछ स्किल Right. सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी बेस्ट स्किल्स हो सकती हैं सीखने के लिए? जैसे फॉरेन लैंग्वेज का आना भी अपने आप में स्किल है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया है, एमबीए किया हुआ है, या कुछ और किया हुआ है, डिप्लोमा कुछ भी, दे आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल Right. कंपनीज नाउ, दे आर लुकिंग टू एनहांस देयर स्किल सेट्स। तो एक तो फॉरेन Right. लैंग्वेज की स्किल हो गई, ठीक Right. है, तो आप मानते हो फॉरेन लैंग्वेज की स्किल है, उनको सीखनी चाहिए? Definitely. I've done my intermediate. As like my subjects were PCM only, like हम्म। math side only. हम्म। So after that, I was like that. What can I do? Like what can I do to separate myself from the crowd? So initially, I was like that. Like everybody wants to go to IIT and everything, but very few students go there, like can do that. So I was like, I either I can do BCA or I can do BTech. But BCA, BTech में there is too much supply and comparatively less demand राइट। considering the supply. So मेरे को था कि what can I do to what can I do, like which course can I do that can to a degree I can separate myself from the crowd. हम्म। So that was the reason I chose French. हम्म। So French, like right now, French is something where companies are ready to teach you other skills as well. हम्म। For example, I told you about lead data analyst, which is finance role, but I could have gotten to other directions as well, like tech support role. I could have gone to um, supply chain management. Like I also got a call from Maersk company. They are like one हम्म। of the largest logistic companies. So हम्म। like companies are ready to teach you the skill if you know a foreign language. So हम्म। that is for sure. So if you want to work in India, even if you want to work in India or you want to go out in every way, like if you can learn a foreign language, like it will give you a great edge. Like it will be the differentiator. For example, you are doing BTech, your friend is doing BTech, but you have learned a foreign language, so it can be a huge differentiator, and it can open like a different door altogether of opportunities for you. वही वही एग्जैक्टली exactly जानना है। जैसे जो लोग मान लो बीटेक करके बैठे हैं, वो एक एमएनसी में है, अब वो सोच रहे हैं मैं एक स्किल सीखूं, अब वो डिसाइड करते हैं चलो मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, तो वो क्यों सीखे फॉरेन लैंग्वेज? क्या बेनिफिट होगा एक बीटेक पर्सन को या एमबीए वाले को जो एमएनसी में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, अब वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखे, चाहे फ्रेंच है जो कोई भी, क्या बेनिफिट होगा उसको? So, for example, let's say you have done BTech, okay, and like majority of the people who do BTech or BCA, they are from tier 2, tier 3 college, right? So, let's say you have the degree, and initially you get into let's say you get into Amazon into a non-tech role initially, हम्म। right?
you can do that very easily via language, right? You can get into, let's say, Amazon with a non-tech degree, and then you can use their internal programs as well, internal transfers as well. You have the degree, you can crack it internally. It would be easier for you compared to other people who are Hmm. trying to directly get into a tech role. Hmm. So that can give you that sort of edge, right? Amazon, you can use internal transfers as well, like for all the companies, not Amazon specifically, Hmm. but all the companies where there are language rules, you can do that for them, right? Every Hmm. company like like every single company almost has a tech side to their business. So all the companies that have a language profile, you can maybe initially enter with that and then try to switch to a tech role. Maybe that can make it easy for you compared to people who are directly trying to join like the FANG tech roles or Hmm. like very good product based companies. Hmm. So like otherwise, for example, let's say you are not getting a job into a tech domain maybe, Hmm. right? Because initially, if you're from a tier two, tier three college, so most tech roles like pay really less, like I think 2.5 to 3. If you're from a tier three college, for most roles it is like that. Hmm. So language can give you a good start. Like in language, it would be almost double that salary, and then you can transition into a tech role तो आपको internally. तो आपको लगता है कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल किसी ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है एंड अगर वो लैंग्वेज सीखता है कोई भी तो उसको सैलरी पैकेज उसका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है? So it depends, right? It totally depends. For example, let's say you are working in a MNC, right? हम्म। And आप let's say आप KYC आप like इसमें रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में काम कर रहे हो, right? हम्म। इन इंडिया में काम कर रहे हो विद MNC. Let's हम्म। say for example Amazon only, right? हम्म। अब now इफ अगर आपको लेट्स से बाहर यूरोप में काम करना है या कहीं और काम करना है एंड यू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, राइट? यू गेट दैट सर्टिफिकेशन by the government of that country, हम्म। so it will be far easier for you to like go to that country, do the हम्म। internal switch, right? So by that also your salary will automatically like you will get paid like the minimum wages of that country, so your हम्म। salary could automatically go like 3 4 fold. आप कह रहे हो कि मतलब कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल अगर एक लैंग्वेज सीखता है तो उसको काफी हेल्प होगी उसके करियर में, चाहे वो सैलरी हाइक है या अब्रॉड में जा सकता है वो, राइट? ओवरऑल Yes, yes, तो yes, यानी कि हर वर्किंग प्रोफेशनल को एक लैंग्वेज जरूर सीखना चाहिए। definitely. Like I would say that because like it's becoming too competitive, हम्म। right? It's becoming too competitive. हम्म। Even if you are, let's say you're a software engineer working from India, right? You're getting paid extremely good, and there is a project where your company is doing with a different country, right? People of that country are collaborating and you are collaborating. For example, French software engineers are collaborating and Indian software engineers are collaborating. हम्म। So हम्म। so it is very highly likely that if you know the language, they would हम्म। consider you for that, right? Other than when compared to like the people who don't know the language, right? They would prefer you over them, राइट। right? So that would give you an edge. So it is never too bad to know a skill. राइट। So हम्म। yeah, like बिल्कुल सही कहा it आपने। can give you an edge.